This is Raja here. I'm in Saman in Shimla. I'm doing the eco investigation, water investigation on why the landslide happened. Just observing. और आने वाले टाइम में हम नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नेचर प्रोटेक्ट रहेगा तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे. सो सबसे बड़ा आने का फ़ायदा होता है बारिश के समय. सो आई हैव कम इन द रेन एंड बारिश के समय ही आप देख सकते हो क्या बिहेवियर है ड्रेनेज का. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ. फुल मैं आपको यहाँ लेकर जा रहा हूँ कैसे ये फर्न्स और ये सब ग्रो कर रहे हैं और कैसे ये स्टेबल सॉइल है और कैसे वहाँ पे हुआ है इंसिडेंट. देखो स्लोप, यही हम देखने आए हैं. अपना दिमाग नहीं लगाना अभी हमें ऑब्ज़र्व करना है नेचर कैसे काम कर रहा है. ये पानी कैसे आता है, कैसे जाता है, प्लांट्स ऐसे क्यों ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे होल हुआ है तो क्यों हुआ है मिट्टी का, ये वाला क्या रीज़न है और क्या मिस्ट्री है हर एक चीज़ की. रिटेनिंग वॉल, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल देख पा रहे हैं. वहाँ पे ना, यहाँ पे जो हिल है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हिल आपका अंदर की तरफ आ रहा है, कॉन्वेक्स और वर्टिकल. आपके पास रिटेंशन थी यहाँ पे रिटेंशन नहीं है. कॉन्वेक्स एरिया ये नीचे की तरफ है आपका स्लोप, बट यहाँ ना ऊपर ग्राउंड है तो इसलिए टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो जाए. सेफ है. ये भी थोड़ा सा यहाँ स्टीप कम है और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स है. आपका पानी अपना इस ड्रेन से बाहर जाता है. ये अगर रोड में नालियाँ नहीं बनानी तो हमें ड्रेनेज का बिल्कुल ध्यान देना है. ये कोई तरह की ड्रेनेज नहीं है. ये देखिए पानी का फ्लो, ये देखिए आपको दिख रहा है, छोटा सा ही है. ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है. ये देखिए फ्लो नहीं कैसे बह रहा है. अब मैं आपको रिटेनिंग वॉल का दिखाने जा रहा हूँ. ये देखो रिटेनिंग वॉल, यहाँ की पुरानी टेक्निक है रिटेनिंग वॉल की, पत्थरों को खड़ी कर करके. ये जो नाली में पानी आ रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट भाई साहब पानी इस चेम्बर में नहीं आ रहा, कचरे ने रोक दिया. हमारी ये नालियाँ पहले कच्ची होती थी, खड़ंजा, हमने इसमें सीमेंट लगा कर, कंक्रीट लगा कर पानी को पीछे चौक कर दिया. यही बाकी बाद में रोड से डिफरेंट चैनल से बहकर अपना स्लोप ढूंढकर नीचे जाता है. अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अब मोस्टली ख़त्म कर दी है, न्यू कॉन्क्रीटाइज. ये देखिए कैसे पहले चैनल ड्रेन स्टेप्ड ऊपर तक होती थी, अभी आधी तो चौक हो गई है और साइड में सीमेंट से कवर हो चुकी है और नीचे भी इसकी बैंड हो चुकी है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ से लेकर ऐसे ऊपर तक हमें अगर इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अब हम उस जगह में आ रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था. यहाँ पे देखो कितना, कम से कम 8 से 10 फुट, 15 फुट रोड है. रोड से यहाँ से स्टार्ट है फॉरेस्ट लाइन, यहाँ से यहाँ तक होगी. क्वेश्चन है रिटेनिंग वॉल क्यों नहीं बनी हुई थी. एक और ऑब्जर्वेशन. मज़े की बात यह है, ये देखिए साइड के पेड़ ठीक है, ये वाले भी ठीक है. ये देखो बिल्कुल आयरन की रेलिंग मुड़ गई है. ये पेड़ भी ठीक है और ये पेड़ भी, और ये कॉन्वेक्स में गया है, वो पेड़ भी देखो ठीक है. ये फॉल ना ऐसे करके कॉन्वेक्स होकर बिल्कुल कॉन्वेक्स हुआ है और ऊपर से ब्रॉड, वो एडवांस स्टडीज़ और वो रेलवे लाइन. की रेलवे लाइन ऊपर रह गई
नीचे इम्पैक्ट गया है, प्योर ड्रेनेज इशू। बट क्यों? देखो बट वहाँ पे ड्रेनेज, एक चैनल, दूसरी चैनल, तीसरी चैनल, चौथी चैनल। ये आपका फॉल हो रहा है नीचे से मड, माइक्रो लैंडस्लाइड। ये बिल्कुल स्टेबल लैंड है। देखिए ट्री की जब ये बनी थी, रोड पुरानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टडी करने का सिचुएशन है। हमने कुछ तो ऊपर किया है जिसकी वजह से ये हुआ है। ऑन द रेलवे ट्रैक, सी हाउ आफ्टर एवरी 100 years the railway track is intact. It was designed in such a way that even in peak floods the railway track will be intact and the water will flow below. If you see, the trees have fallen horizontally and not vertically down the line. That means the impact was towards the center. There was a central force of drainage that was going around, and that is also evident if you see some trees which are still standing on the side, which are vertical on the bottom. So that means the impact is towards the center. Even in this railway track before that, the drainage channels were given, but here a large bridge was given. That's worth thinking. Due to the wrong drainage, what has happened, water is flowing down through new routes, and debris is coming and construction demolition waste is coming, and see how it is choking the natural drainage and even destroying the flora and fauna, which is one of the major reasons of peak floods during these peak intensity rains. Here also if we see, the first road is very intact, the second road is actually damaged a lot, and here also the trees have fallen in a central drainage line. The side trees are vertically standing and the drainage trees have fallen towards the main center line. And if we see further, some road blocks, cement blocks have also fallen among the debris, which shows that there has been some construction RCC concrete which has flowed down. One important thing is that the retaining walls towards the forest have not been given. The mud is falling, the soil erosion is happening, soil clipping is happening, dry leaves are happening, they are all falling and choking. When will we start maintaining the forests and cleaning them? They have to be maintained because of human intervention. That's not important, that's imperative. Road 1, Road 2, railway track, the Shiv temple, Baudi, and this is IIAS. So it started from here. It was impact was like this. This was the main impact line. This is the starting, and from Vice Regal Lodge, and it must have started from here. So this was one trigger point, one trigger, this is one trigger,
This is second trigger. This third trigger. So idea is, since the impact has happened here, so obviously this and this has been one of the major impacts. So idea is, we have not maintained this retaining wall and this retaining wall, which obviously due to soil saturation issues and all the issues, the water has flowed through the main original channel where the bridge was designed by Britishers. This is the rail track. This is rail bridge. This is road 2. This is road 1. So अगर आप देखिए, ये जो बावड़ी है, इसका ये पूरा कैचमेंट एरिया है, इधर से भी इधर से भी, ये पूरा वैली, ये पूरा कैचमेंट एरिया है. तो ये नेचुरल ड्रेनेज ही जा रहा था, और ये इसका द मेन ड्रेनेज लाइन है. And the bridge here by the railways has been designed excellently. The railway line has been of very good quality, but this road is also in a drainage. This was also in a drainage point, the bicycle lodged there. But what might have happened is that, see, water is coming from everywhere. It's a natural drainage. It's a watershed, you know. It's a micro watershed. So what must have happened, water is coming from here everywhere, but one of the major issues, we have, over a period of time, we have not maintained these areas. The retaining walls have totally collapsed. This road is intact, which this road is broken, which says that here the velocity had happened, a critical velocity. That means lots of had happened here itself. That means we have not maintained this entire forest area, this drainage. We have not maintained the soil, the tree. We have not maintained the soil roots. The soil erosion must have happened. Even this retaining wall of Vice Regal Lodge, the bottom of it was maybe not maintained. Over a period of time, the mud must have done soil erosion, and we were not paying attention to that. So it must have, so this time there was excessive rain and there was rain saturation. So all these factors might have triggered simultaneously, and there would have been, you know, a cascade of activities, cascade of things, and one by one after another, and this happened. But problem is, this could have been prevented if we would have done proper retaining walls. The railings which were made of RCC would have been done proper. The drainage would have been ensured, the water is not going everywhere, and the natural drainage would have been ensured. Now this impact would have been minimized. The event may or may not have happened, but impact could have been minimized, and maybe the incident could have been minimized.